अब सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। कश्मीर लाइफ की ड्रीम बिग सीरीज जो कि अभी चल रही है, और हम इस ड्रीम बिग सीरीज के तहत कई ऐसे लोगों से मिले जिनकी जो तालीम के सिलसिले में कश्मीर से बाहर कई इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ी है जैनब सईद। उनका जो एकेडमिक जर्नी है वो कश्मीर में और फिर कश्मीर से बाहर चल रहा है, और अभी वो एक मेडिकल ट्रेनी है बेलफास्ट में। इनकी जो जर्नी स्टार्टिंग से अभी तक की है वो हम इनसे जानेंगे। जैनब, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। हाय। फर्स्ट आई वांट टू आस्क यू, वेयर आर यू फ्रॉम इन कश्मीर? मैं श्रीनगर से हूँ। श्रीनगर हवल। मतलब मेरी पूरी मतलब परवरिश वहीं कश्मीर में ही हुई है 19 तक। दैट्स ग्रेट। तो आपकी स्कूलिंग यहाँ पे कहाँ हुई? मैं लिंटन हॉल में थी 8th ग्रेड तक। उसके बाद मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में थी टिल माय 12th ग्रेड। सो ट्वेल्थ के बाद आपकी क्या जर्नी रही? लाइक जैसा कि आपने बीबीएस किया है, सो वाज इट लाइक डायरेक्ट ट्वेल्थ के बाद एंट्रेंस एग्जाम? सो आई हैड माय सीबीएसई। तो सीबीएसई में आपका एग्जाम होता है मार्च में। तो आई डिडंट जी। हैव एज मच टाइम एज एवरीवन एल्स अपना एंट्रेंस के लिए पढ़ने के लिए। और तो इस वजह से आई वाज थिंकिंग आई माइट गो फॉर इंजीनियरिंग। और मेरा प्लान था कि मतलब मैं इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रही थी क्योंकि मेरा मेडिकल और नॉन मेडिकल था इन 12th। लेकिन दे समथिंग कॉल्ड सॉक स्कॉलरशिप उस टाइम काफी नई नई निकली थी कि आप अगर आपके 12th में अच्छे ग्रेड है तो आप सॉक स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। और देन आई अप्लाइड फॉर दैट, and via that then I got into then I decided I'll go to Bangladesh. उस टाइम काफी नया नया था, so I just took that leap कि I'll go to Bangladesh. दैट्स ग्रेट। तो आपने स्कॉलरशिप का जिक्र किया, साख स्कॉलरशिप, जो कि यहाँ पे अभी तब तो नया था, अभी आई गेस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप के थ्रू जाते हैं पढ़ने। तो उस स्कॉलरशिप के बारे में स्टिल आई एम श्योर देयर बी स्टूडेंट्स हु हैव नो आइडिया अबाउट दिस स्कॉलरशिप और दिस वे ऑफ स्टडिंग। तो क्या आप प्लीज बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि ये साख स्कॉलरशिप का कैसे क्राइटेरिया होता है और उन्हें ये स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो उस टाइम उतना आइडिया नहीं था। हम मेरे मेरे पेरेंट्स है वो गए थे वाया द एजेंट। लेकिन अगर और अब काफी वहाँ काफी सारा करप्शन भी होता है, लेकिन एटलीस्ट उस टाइम आपके आपके जो ग्रेड्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वो मैटर करते थे, और स्पेशली आपके ग्रेड्स बायोलॉजी में। तो मेरे उस टाइम 92 थे और फिजिक्स और केमिस्ट्री में ठीक अच्छे मार्क्स थे, लेकिन उतने ज्यादा नहीं थे जितने बाकी कैंडिडेट के थे। but just because of the biology marks आपके काफी you get selected quite आपको काफी high position पे मिलती है। लेकिन later on the problem is that कि हर like everything else there's a lot of corruption everywhere। तो कभी कभी कुछ अगर आपका नाम एक बार लिस्ट में आ जाता है तो कभी कभी कुछ लोग मतलब एजेंट्स को पैसे देंगे ताकि आपका नाम थोड़ा सा हाई आ जाए। क्योंकि बांग्लादेश में 3 मेन एटलीस्ट तब 3 मेन मेडिकल कॉलेजेस है, ढाका मेडिकल कॉलेज, सर सलीमुल्ला, और एक और था आई कांट रिमेम्बर इट नाउ। बट वो माइमेन सिंह आई थिंक। और दे व्हाट दे विल डू इज दैट based on your grades they will put you in the top 1 and top 3। लेकिन अगर आपके बायोलॉजी में अच्छे ग्रेड्स है then it might be worth speaking with the agent। or if you don't want to go through that route, I think you can directly go to Bangladesh embassy and try to get the forms and apply for it directly। एप्लीकेशन प्रोसेस इज थ्रू द बांग्लादेश एम्बेसी? Mhm. ऐसा कुछ नहीं होता ऑनलाइन? बिकॉज आजकल सब कुछ ऑनलाइन है हर एक चीज का, तो इसका ऐसा कोई वे आउट नहीं है? I went to medical school in 2010। तो तब से तो 12 साल हो गए। जी। So things जी। might have changed। या डेफिनेटली। तो उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप है, लाइक व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड? मतलब आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, जैसा कि आपने कहा बायोलॉजी के मार्क्स ज्यादा मैटर करते हैं, बट स्टिल ऑन एन एवरेज अगर हम देखें कश्मीर के स्टूडेंट्स में, आपको क्या लगता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन द स्कॉलरशिप? जब मैंने अपना 12 दिया था तब परसेंटेजेस इट वाज अनकॉमन टू गेट 90s 99 95। अब काफी कॉमन है। तो आई थिंक कंपटीशन काफी बढ़ गया है। तो इट इज बिट ट्रिकी बिकॉज कंपटीशन काफी ज्यादा है और बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं जिनको 95 90 96 मतलब 90s में अब परसेंटेज आती है। बट आई थिंक इफ एनीवन हैज अबाउट 90s इन देयर 12 ग्रेड्स 10 ग्रेड्स में, आपको 10 ग्रेड्स में भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए, दे टेक द 10 एंड 12th। So you should apply for, give it a try, give it a try and see। And or agar even if you don't get in the government college, trying in private is very good too। But of course
that is a bit more money, but not as much money as it would require you to do private in India. तो उस हिसाब से मुझे लगा कि it's a bit better. उस स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन के बाद जो भी आपका वो रास्ता रहा होगा, उसके बाद आपका बांग्लादेश में सिलेक्शन हो गया। किस कॉलेज में आपने अपना फाइनली फिर मेडिसिन पढ़ा? ढाका मेडिकल कॉलेज में। ऑब्वियसली यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जाते हैं बांग्लादेश पढ़ने के लिए, बट कहीं ना कहीं आई फील वहाँ एक वो स्टिग्मा सा है कि जो यहाँ स्टूडेंट्स को फिर फेस करना पड़ता है कि ये बांग्लादेशी डॉक्टर है। इट्स अ स्टिग्मा एंड नथिंग एल्स, बिकॉज आई नो पीपल हु आर बेटर, बट स्टिल लोग हैं बांग्लादेशी डॉक्टर। सो वाज देयर एनीथिंग लाइक दैट टू यू एंड हाउ डिड यू फेस इट? बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें होता है कि नहीं, आई वोंट गेट दैट डिग्निटी। No, I do agree. I think for me, जब मेरी like I couldn't wait to come back to Kashmir, or I've lived in Kashmir. I love Kashmir. लेकिन जब 2015 में मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, and I did my internship in Bangladesh. Then I came back, or the first hospital I joined was SMHS in, और काफी स्टिग्मा काफी ज्यादा था वहाँ की। आप अगर आपने बांग्लादेश में पढ़ा है तो क्लियरली you're not good enough and you don't know your stuff. Or even I could, and even I being a female doctor, I was very surprised कि आप it is difficult to work anyways as a female doctor in Kashmir. आपको you feel anyways कि आप you're not as good as a male doctor, at least the way people perceive you. But for me it was also the fact that कि आप बांग्लादेश से हो तो आपको कहाँ पता होगी ये कहाँ पढ़ाया होगा. But it is so contrary क्योंकि we get taught so well in Bangladesh, and और आपकी जो मतलब अपनी जो professors है, consultants है वहाँ, they are also really good. You learn examination, you learn your basics. So for me it was like I was like, no, maybe I might try just going to UK, and yeah, I think that really played a decision in deciding कि नहीं, I'm going to maybe leave Kashmir. Okay, it has its part to play in your journey as well. So after you graduated, उसके बाद आपने MD किया, स्पेशलाइजेशन, उसका क्या वे रहा और why did you choose it? Immediately जब internship के बाद मैंने मतलब 6 महीने काम किया SMHS पे, faced all the problems. Then I decided to give my PLAB part 2. और I was क्योंकि जब आपको कोई आपका environment आपको बोले कि you're not good enough, you kind of internalize it, and I kind of believed कि maybe I'm not good enough. तो जब मेरे PLAB exam pass हो गया, I was very very happy. I passed my PLAB part 2. But even when I came to UK, आप जब पहले आते हो, you come in a non-training job, and it was the same thing. दोबारा आपको, because you are a foreigner now, people think you are not good enough. And because so it's the same kind of stigma, and you're like, मैं एक जगह से निकल गई और दूसरी जगह गई जहां आपको same stigma और same problems थे कि because you are a foreigner, and because you're a female, and because you're brown, तो आप मतलब you're not good enough. So I think that was for me like, nay, I'm going to get in training that year itself. So within 6 months in UK, I applied for training in internal medicine, and I always knew I wanted to do the medicine. So then I applied for the medical training there, and then and I got selected. So I was a bit again surprised, but I was kind of like, you just have to keep working, keep taking life as it comes. Or and then yes, I started my internal medicine training. So from London I went to Northumberland, which is northeast part of England, and there I did my internal medicine training. Okay, so ये भी एक अच्छा खासा इसमें आपने जैसा खुद कहा कि you were again treated as a foreigner. आप एक जगह से उस चीज से भाग के आए वहां। पर ये जो पूरा आपकी जर्नी रही वहां तक भी, ऑब्वियसली सबसे पहले ही एक हर्डल होता है कि मेडिकल जर्नी है, विच इज टू मच ट्रेनिंग एज वी ऑल नो। उसके बाद यू वर अवे फ्रॉम होम, राइट? तो आपने इस चीज को कैसे टैकल किया कि घर से भी दूर रहना और इतना एक्सट्रेनस एकेडमिक प्रोसीजर है उसके थ्रू जाना? हाउ डिड यू हैंडल दैट? Not well initially. I think जो मेरा पहला साल था ट्रेनिंग में, आपकी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, और I was in a system I had no idea about. Or even though मतलब I think even though training in Bangladesh helped me with knowledge,
आप जब नए स्ट्रक्चर में काम करते हो, इट इज वेरी डॉन्टिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो आई वाज स्ट्रगलिंग विद दैट. एट द सेम टाइम आई वाज 26 अराउंड दैट टाइम. और आप कश्मीर में एक चीज होता है कि एज अ फीमेल, नॉट ऑल द फैमिलीज, नो मैटर हाउ वेल यू डू इन योर करियर लाइफ, दे विल बी लाइक आपकी आप शादी कब करोगे, और आप मतलब दे वांट टू फोकस यू ऑन दैट. माय पेरेंट्स वर लाइक अब डॉक्टर बन गए, अब आपने वहां ट्रेनिंग में हो, बस अब शादी के बाद में सोचो. और वहां से मैं जहाँ ट्रेनिंग में कर रही थी, आपके असेसमेंट्स होते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, आप पूरे अननोन जगह पे हो, आप अनफेमिलियर सराउंडिंग्स में हो. तो यू फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज फ्रॉम देयर, एंड यू नॉट गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली बिकॉज दे आर लाइक क्यों करना है ये, क्यों कर रहे हो, क्यों, यू डोंट हैव टू पुश योरसेल्फ. तो आई थिंक इट्स जस्ट लाइक you have to know. So in my head, I kind of was like, I know what I can do, and I know that uh, you have to be humble in life. You have to accept that कि where I am lacking, कहाँ मेरी खामियां है, और कहाँ मैं improve कर सकती हूँ. And I saw that whole phase of my life as a problem solving, कि life मुश्किल है, support नहीं है उतना ज़्यादा. What can I do to really make it better? And then मतलब मैं सवेरे जल्दी उठती थी, तो सुबह थोड़ी सी पढ़ाई, काम पे जाना, फिर शाम को थोड़ी सी पढ़ाई अपनी. आई स्टार्टेड पेंटिंग, आई स्टार्टेड राइटिंग, अपने एक तरीके से अपना स्ट्रेस रिलीव करना अपनी. तो it was difficult, but I think you sometimes it made me into a better person and more humble person. I don't know. So आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को टच किया अभी, यू स्टार्टेड राइटिंग एंड पेंटिंग, बिकॉज हम लोग कई बार ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं एकेडमिक प्रेशर में, पेयर प्रेशर में इतना ज्यादा वो उसमें दब जाते हैं कि उन्हें नहीं पता होता कि हम बाहर कैसे निकले. ओके, एंड यू सेड दिस पॉइंट कि आपने खुद को राइटिंग में और पेंटिंग में इंडल्ज किया इवन दो आपका भी एकेडमिक स्ट्रेस काफी था. सो क्या आप उस बारे में बता सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू जस्ट हैव टू स्ट्रेस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू स्टडी, लाइक खुद के लिए टाइम निकालना ऐसे रिलीविंग हो सकता है. कैन यू प्लीज शेड सम लाइट ऑन दैट, हाउ इट uh, हेल्प यू? सो आई थिंक ये आई हैव समथिंग सेम नाउ ऑल्सो. हम जिस दुनिया में है, हम कोई किसी और चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. हम सिर्फ I can only be sure of my actions. I can only be sure of कि how I can to show up. तो it's like caring for yourself. And बहुत सारे लोगों के लिए होता है कि हाँ, हम डॉक्टर बनते हैं, हम इंजीनियर बनते हैं, या हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं. There's a lot of family pressure also. But what do you really want to do in life? I think, and I think for me, even though I do like being a doctor, it was always that I also liked literature, I also liked writing, I liked art. So it was in my head, I was like, I need to find a way to look after myself and find a way to sublimate my anxiety, sublimate my fears. तो बहुत सारे लोगों के लिए होता है कि वो लोग दे गो एंड प्ले क्रिकेट, उनके लिए वो सब्लिमेट हो जाता है. और कुछ लोग मतलब दे विल गो एंड रीड अ कुरान, उनके लिए वो सब्लिमेट हो जाता है. कुछ लोग प्रे करते हैं, कुछ लोग रनिंग के लिए जाते हैं. तो मेरे लिए वो था, व्हेन आई विल पेंट और व्हेन आई वाज राइटिंग, दैट वाज माय सब्लिमेशन. कि जो सारी पूरी दिन की एंग्जाइटीज है और पूरी दिन की फियर्स है, जो मैं किसी और को बता नहीं सकती थी, मैं अपने आप को बता रही थी, by a story of writing, by a story of creating. So, and I think everyone needs that. You need to have something to to get it out, to get it to sublimate it. And I think for us, from the religion we come from, वो we all have that. कि मतलब अगर आप कोई इंसान अगर 5 टाइम मतलब प्रे करे, even that time, every time they are in contact with the God, or every time they are praying, you're sublimating that. You're like कि हाँ मेरी लाइफ हो रही है, लेकिन I'm going to put my troubles into something else, and then you can focus on the life again. So you need to have that. I think that helped me a lot. सो अगर हम अभी की प्रेजेंट की बात करें, व्हाट आर यू डूइंग प्रोफेशनली एग्जैक्टली? So once I finished my internal medicine training, उसके बाद you apply for super specialty. So I always wanted to do neurology. I'm fascinated by the brain and how mind works. And so then I applied for the super specialty training in England and also in Northern Ireland. And I got selected in Glasgow and in Belfast. And I decided to go for Belfast. They're very pro freedom and they're very more left inclined, or काफी काफी generous environment है वहाँ.
So now I'm in my second year of my neurology training. So Okay. after 3 years, I become a neurology consultant. So which is Mhm. same like which is same like a consultant in Kashmir, but I still have like 2 more years to become a consultant. जो भी आपकी आपने कहा कि आपने 2010 में Mhm. कॉलेज में एडमिशन लिया, सो इट्स बीन ओवर अ डेकेड। आपकी ये जो अच्छी खासी लंबी एकेडमिक जर्नी रही है, बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स 3 साल की ग्रेजुएशन 4 साल में दे गेट टायर्ड कि ये ज्यादा हो गया, ये नहीं हो रहा। सो ये जो आपकी एकेडमिक जर्नी रही है जिसमें यू आर स्टडिंग, यू आर गेटिंग स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, what do you think helps a student to stay focused and stay consistent? I think remembering ki why you're doing it for, अगर आपके dreams अपने नहीं हो गए, if you are living someone else's life, or if you're trying to fulfill your parents' dream, or if your reasoning is like, if I do A, B, C, I'll get that outcome, then you will get tired if you don't get that. You have to you have to do it for yourself. You have to be like, I want to, like, for me it's like I want to be a neurology consultant because I enjoy reading about Hmm. brain. I want to help people who have these conditions. I want to understand these conditions. And for me the journey would not be over till I become that person. So knowing the end point कि आप क्यों कर रहे हो ये चीजें, or not seeing going to work as work, especially I think for people जो healthcare में काम करते हैं, you're doing something incredible क्योंकि every day you wake up, you have an opportunity to make someone's life better and ease someone's suffering. और I think it's very beautiful कि आप मतलब क्या बोलते हैं, आप लोगों की lives में आप शिफा लाते हो हर दिन, और आपकी एक अपॉर्चुनिटी है हर दिन करना. And if you see every day as that, कि every day I'm giving the opportunity to help people, to ease the pain, to ease the suffering, to bring smiles, or then it does not feel long, it does not feel strenuous, it does not feel exhausting. It feels nice. I think you look forward to next day, and you look forward to next day. So I wouldn't say, don't say journey as, oh, 10 years, 5 years. See one day at a time कि क्या कर सकती हूँ मैं Yeah. आज के लिए और कल के लिए, और so. कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ओके, एंड गिवन मेडिकल इंजीनियरिंग, स्पेसिफिकली अगर हम अभी मेडिकल की बात करें तो अच्छा खासा कंपटीशन है यहाँ पे। इवन दो कुछ जीएमसीज ऐड भी हुए, स्टिल एप्लीकेशंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। तो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के ऑप्शन, बांग्लादेश जिसमें टॉप में आता है, ऑप्शंस होते हैं, बट स्टिल देयर इज अ स्टिग्मा। ओके, सो वैसे स्टूडेंट्स, वैसे लोगों के लिए, डू यू हैव समथिंग टू से, keeping in view the journey you have had, keeping in view the position you are at? I think worry about what you think of yourself, and worry about how you see yourself and how you value yourself. Even if you're in medical school, study as much as you can. Even if you can't get into medical school and you have to take on a different journey, maybe जो भी आप चाहते हो, अपने आप पे फोकस करो, अपनी ओपिनियन पे फोकस करो कि आप अपने आप को कैसे देखते हो. आप जब सुबह उठते हो, अपने आप को मिरर में देखते हो, आप क्या देख रहे हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका परसेप्शन क्या है अपने टुवर्ड्स. तो इफ यू आर स्ट्रांग, and if you are strong in your opinion of yourself, and if you are strong in what you think and your journey and your dreams, I think everything else becomes secondary. Because no matter what you do, at least one thing I've realized, people always would have a problem with you. Even if I was like, if I did exactly what my parents wanted, my work would have problem with me. If I did exactly what my work wanted, someone else would have problem with me. And even if no one would have a problem with me, the mind will create problems from nowhere. So you have to really work on having that faith within yourself, and creating a place within yourself that no matter what world tells you, you're safe in that world. You've put this very rightly, and I agree with you. जाते जाते जो scholarships जो हमारा basically रहता है कि हम students को ज़्यादा से ज़्यादा scholarships, fellowships, ऐसी opportunities के बारे में बताएं जो उन्हें नहीं पता हो, because not everyone has a guidance के okay the view of this option. तो क्या आप हमें कुछ 3-4 ऐसी यूनिवर्सिटीज या स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप्स का नाम बता सकती है मेडिकल फील्ड में जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी? जहां तक मुझे पता है, डेफिनेटली देयर इज अ सार्क स्कॉलरशिप. आप वाया उसके आप बांग्लादेश जा सकते हो. इफ यू हैव रियली गुड एकेडमिक स्टेटस, आई थिंक इट्स वर्थ आल्सो अप्लाइंग फॉर schools in scholarships outside too. I know at undergrad level it is a bit difficult, but it's worth looking at medical schools and the scholarship. They have
a lot of scholarships for South Asian people in any universities you will try. Worth making a try to look at those, the criteria for those things. And Mm. but also the main thing, one thing I want to advise, not getting too fixed about that you have to do the medicine or you have to do the engineering. You have to do just like these professional, like lawyer or teen char professional jobs hote hai jo all the parents push you for. If you really Mm. like something, if you really enjoy something, we have a global market now for you to be well and do well in anything now. There जी. is a space for art, there is a space for music, there's a space for writing, there's space for like even doing a PhDs in English literature or physics, purely physics, doing purely mathematics and going in data analyst, learning coding. So the market is way more bigger and larger than what we ever thought it could be. So don't be limited by कि नहीं निकला मुझे scholarship में, I don't need to do this, I need to keep trying and trying and trying. Do what you really enjoy. It's way more bigger than we ever thought. Yeah, thank you for your advices. I'm sure it will help students. It will help students who are looking up to medical college and MBBS. I'm sure it will help them. Thank you for connecting with us. Thanks a lot, and yeah, thank you.